तो जावास्क्रिप्ट के लिए अभी वी विल नॉट डायरेक्टली वर्क इन आवर कॉलेज एग्जाम्पल. अभी फिर क्या, अभी फिलहाल क्या करेंगे, विल क्रिएट अ सेपरेट जावास्क्रिप्ट, एक फोल्डर बनाएंगे, विल कॉल इट एज जावास्क्रिप्ट. इसके अंदर एक HTML फाइल, नॉर्मल HTML फाइल इन दिस केस. So I'll keep the file name as index.html. And normal index.html mein we will be having the structure of the HTML in this. So we have the HTML structure. I'll keep JavaScript. And I told you in the last class that HTML file के अंदर अगर आप JavaScript लिखना चाहते हो तो we make use of the script tag in this case. Script tag के अंदर दो attributes है. One is language. Language में JavaScript बोल के टाइप करते हैं. Then we have one more that is type in this case. Type में text slash JavaScript कि आप कौन सा scripting language use कर रहे हो. Inside this, first we start with um, the the built-in functions in this case. Built-in function में अगर मेरे को यूजर को एक मैसेज डिस्प्ले करना है, we make use of a function called as alert बोल के फंक्शन है. तीन फंक्शन है एक्चुअली. वन इज अलर्ट, अनदर इज confirm, और एक है और एक इज confirm, alert and close. तीन built in functions यहाँ पे हैं. Of course, very rare we make use of close in this case, but alert and confirm are very regularly used tag in this case. तो alert क्यों use होता है? Whenever you want to display a message to the user on the HTML page, we make use of the alert in this case. Alert के अंदर कुछ नहीं, you put some message in this case, say good morning, save करो and run that page in this. तो पेज रन करने के लिए जस्ट राइट क्लिक एंड क्लिक ऑन ओपन विथ ब्राउजर. तो जैसे ही आपका ब्राउजर ओपन होता है, इट विल डिस्प्ले यू द मैसेज ऑन द स्क्रीन इन दिस केस. ओके, अ वेरी इजी मेथड टू डिस्प्ले अ मैसेज टू द यूजर. ये बॉक्स को हम बोलते हैं पॉपअप विंडो बोल के बोलते हैं. तो पॉपअप विंडो में द मैसेज विल बी डिस्प्लेड इन दिस केस. The first point. Second point, sir, is it necessary that the script must be written in the body tag itself? No, you can in the head tag. The answer is no. आप जिधर चाहे उसको उधर डाल सकते हो. You can put it anywhere in the HTML page, but most of the cases we prefer it to be inside the head tag in this case. Okay, head tag के अंदर उसको prefer करते हैं because script यूजुअली कैसा होता है बोलो तो इट इज द फर्स्ट थिंग टू बी एग्जीक्यूटेड ऑन द प्रोसेस. अगर वैसा है तो वी ऑलवेज पुट इट इनसाइड द हेड टैग इन दिस केस. तो ये है हमारा द फर्स्ट फंक्शन, दैट इज अ अलर्ट फंक्शन इन दिस. राइट, built-in functions in JavaScript. Built-in functions, built-in functions in JavaScript. Under that, JavaScript defines three built-in methods, three built-in methods, three built-in methods, which are that first one, alert, open bracket, close bracket. Alert, open bracket, close bracket. Under that, this method is used. This method is used This method is used to display a message. To display a message. Display a message
on the screen to display a message on the screen in a pop-up window. In a pop-up window. Full stop. Next line. The method accepts. The method accepts a parameter that is that is the data to be displayed. That is the data to be displayed. And you can write down line number 8 to 10. Next. Okay. Second function यहाँ पे आता है that is confirm. अगर कुछ ऑपरेशन करना चाहते हो, से एग्जांपल वी हैव डन डिलीट ऑपरेशन इन दिस केस, तो वहां पे डिलीट बटन क्लिक करते ही रिकॉर्ड गेट्स डिलीटेड. अगर गलती से मैंने डिलीट बटन क्लिक किया था तो इट कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वी मेक यूज ऑफ द कन्फर्म फंक्शन. जब भी मैं डिलीट बोल के क्लिक करता हूँ, इट विल ask the user, do you really want to delete the record. अगर मैं yes बोल के कंफर्म करता हूँ तब वो डेटा डिलीट होगा. So for that purpose we make use of the confirm function in this case. Okay. Confirm function भी एक string parameter लेता है जिधर आप वो मैसेज पूछोगे कि are you sure you want to delete. जो मैसेज डालना है we put it inside this, say sure to delete. ओके. कंफर्म मैसेज वो भी एक पॉपअप विंडो डिस्प्ले करता है जहां पे दो बटन रहेगा, ओके एंड कैंसिल. अगर आप ओके बोल के क्लिक करोगे द फंक्शन विल रिटर्न अ बूलियन वैल्यू ट्रू. अगर आप कैंसिल बोल के क्लिक करोगे इट विल रिटर्न फॉल्स. तो मैं क्या कर रहा हूँ, आई विल कॉपी दैट इनसाइड अ वेरिएबल ए इज इक्वल टू. अगर मैंने वहां पे ओके बोल के क्लिक किया था ए विल रिटर्न ट्रू इन दिस केस. अगर मैंने कैंसिल बोल के क्लिक किया इट विल रिटर्न फॉल्स. तो चेक करेंगे व्हाट इट रिटर्न्स इन दिस यूजिंग द अलर्ट फंक्शन. I'll use current atano. Okay. So we were discussing about the confirm function. तो confirm function में हम क्या करते हैं, we give a message to the user कि क्या ऑपरेशन कर रहा है उसका confirmation. The choice can be yours. You can enter whatever message you want. वहां पे दो बटन आता है, ओके एंड कैंसिल. इन दिस केस अगर ओके क्लिक करेंगे तो इट विल रिटर्न ट्रू. कैंसिल बोल के क्लिक करेंगे इट विल रिटर्न फॉल्स. उसके हिसाब से मैं क्या कर रहा हूँ, कंफर्म फंक्शन कॉल करके जो भी वो बटन क्लिक करेंगे उसके बेसिस पे व्हाट एवर द डेटा इज स्टोर्ड हियर वो मैं यूजर को डिस्प्ले करूंगा. ओके. सो क्लिक ऑन सेव एंड रिफ्रेश द पेज. तो यहाँ पे दो मैसेज आ गए. आई क्लिक ऑन कैंसिल इट विल रिटर्न फॉल्स. मतलब वो फॉल्स उसके अंदर कॉपी हुआ था वो मैसेज डिस्प्ले कर रहा है. क्लिक ऑन ओके, बाद में पेज लोड हो जाएगा. अगेन आई क्लिक ओके नाउ इट रिटर्न्स ट्रू. मतलब ट्रू रिटर्न किया है, दैट इज स्टोर्ड इनसाइड द वेरिएबल ए. ओके क्लिक करते हैं पेज लोड होता है. नाउ यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट इन दिस केस. उसके अंदर जो वैल्यू है उसके हिसाब से
हम कुछ भी ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इसको क्या कर सकता हूँ, इफ ए अंदर नॉर्मल इफ एल्स कंडीशन जो आप यूज किए हैं, यू कैन यूज इट हियर। अगर वो डिलीट ट्रू बोल के लिखा है, मतलब ही हैज क्लिक्ड ओके, तो ए के अंदर ट्रू रहेगा। तो आई विल से इफ ट्रू कम इनसाइड दिस, गिव अ परफॉर्म द ऑपरेशन व्हाट एवर यू वांट। तो मैं मैसेज भेजता हूँ, से इनसाइड अलर्ट क्लिक ट्रू और क्लिक ओके। अगर उसने नो बोल कैंसिल बोल के क्लिक किया था, तो वो ए के अंदर फॉल्स रहेगा, कंडीशन फेल हो जाएगा, एंड हियर इट विल से क्लिक कैंसिल। CNCE, okay. So I'll give a message to the user that the user has clicked cancelled in this case. So refresh, and now you have click OK click किया, clicked OK बोल के आता है। अगर मैंने वहाँ पे cancel बोल के किया था, तो it will display me click cancel। तो वो मैसेज उसके हिसाब से डिस्प्ले करेगा। यूजुअली हम क्या करते हैं, इसके हिसाब से ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। सो वेन एवर द यूजर क्लिक्स ओके, वो रिकॉर्ड को हम डिलीट करेंगे, दैट विल बी अप्लाइंग दिस ऑप्शन। सर्च के अंदर हम बाद में इसको अप्लाई करेंगे। ओके, दिस इज हाउ टू मेक यूज ऑफ द कंफर्म फंक्शन इन दिस केस। राइट नाउ confirm, open bracket, close bracket. This method is used. This method is used to display a choice. To display a choice to the user on the web page. Display a choice to the user on the web page. Full stop. Next line. The confirm method. The confirm method displays a pop-up window. Displays a pop-up window where the user can select where the user can select user can select OK or cancel option. OK or cancel option. Next line. The method returns true. The method returns true if the method returns true if the OK button is clicked. If the OK button is clicked. If the OK button is clicked, else it returns false. Else it returns false. And you can write down the example from line number 8 to line number 18.
So that was a second method in this. Girls, I hope you have finished writing. Yes, sir. Okay. So the third function that we have is close. So close function बहुत simple है. जब भी आप वो function को call करोगे, it will close the window in this case. आपका जो भी browser है, the browser gets closed in this. So एक काम करेंगे, I will keep it separate क्योंकि I don't want the main browser to be closed. करो and refresh. तो देख सकते हो immediate the browser got closed in this case. Okay, so वो जब भी आप ऑनलाइन पे सेशन यूज कर रहे हो लाइक बैंकिंग सॉफ्टवेयर वो सब क्या होता है, आपका लॉग आउट के बाद कंपलसरी उसको क्लोज करना है बिकॉज दे डोंट वांट टू स्टोर द सेशन वैल्यूज बोल के आता है. वी सॉ इन द लॉगिन पेज इन दिस केस. तो वो सेशन वैल्यूज को डिलीट करना है तो द ओनली मेथड इज यू हैव टू क्लोज द ब्राउजर इन दिस. तो उस वजह से वी मेक यूज ऑफ द क्लोज फंक्शन. हालांकि इसको कंट्रोल कर सकते हैं. दैट इज जैसे हमने इनपुट वी हैड डन फॉर द प्रीवियस प्रोग्राम डिलीट करने के लिए कंफर्म श्योर टू क्लोज. श्योर टू क्लोज बोल के क्लिक करता हूँ. अगर उसने ओके बोल के क्लिक किया तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आई विल क्लोज द विंडो. अगर उसने कैंसिल बोल के क्लिक किया था तो फॉल्स आएगा. तो वहां पे विंडो को क्लोज नहीं करूंगा. आई जस्ट डिस्प्ले दैट यू क्लिक्ड कैंसिल. So I'll give a message to the user. Save करो, run the page because the page is already closed. Right click, open with Chrome. मैं उसको बाहर लेके जाता हूँ. Take it outside. And जब मैं फिर refresh click करता हूँ, it will ask sure to close. I click on cancel. You click cancel बोल के आ गया. Then I refresh the page again. I click on close. तो वो window close होता है. So this is how we can control the close function in this case. Right on the third one, close method. Under that, this method is used. This method is used to close the browser window. To close the browser window. Full stop. Next line. The method does not accept any parameters. The method does not accept any parameters nor returns any value. Nor returns nor returns any value. Full stop. You can write on the example from line number 8 to line number 18.
Okay. So, girls, you have finished? Okay. So these are the three built-in Yes, sir. functions. These are the three built-in functions that we have in the Python JavaScript in this case. इसके अलावा even user can define their own function in this case. मतलब खुद का मैं एक function भी यहाँ पे create कर सकता हूँ. तो वो function create करने के लिए Python language has sorry JavaScript language has a syntax. वो सिंटैक्स को फॉलो करो तो यू कैन राइट योर ओन फंक्शन इन द जावास्क्रिप्ट इन दिस केस. तो कौन सा भी फंक्शन डिफाइन करना हो देयर इज अ कीवर्ड कॉल्ड एज फंक्शन. तो फंक्शन उसके बाद आपका फंक्शन का नाम whatever the name you want to keep you can keep those function name. उसके अंदर आप इनपुट्स भी दे सकते हो which we call it as parameters and open close उसके अंदर the instructions whatever you want in this case. So here this is a syntax that we use to create a user defined function in this case. लेकिन जब भी आप ये फंक्शन लिखते हो फंक्शन काम नहीं करेगा. वट एवर द इंस्ट्रक्शंस हैव रिटन इनसाइड दिस विल नॉट वर्क बिकॉज ये फंक्शन को कॉल करना पड़ता है टू परफॉर्म द ऑपरेशंस. कॉल करना है तो देर आर मेनी मेथड्स इन दिस केस. वन मेथड इज डायरेक्ट मैं ही खुद इसके अंदर कॉल करता हूं बाय पासिंग द पैरामीटर्स. अगर वो पैरामीटर ले रहा है तो फंक्शन को कैसे कॉल करना वेरी सिंपल. मेंशन द नेम ऑफ द फंक्शन. अगर वो पैरामीटर ले रहा है तो पैरामीटर को पास करो. ओके सो दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज अ फंक्शन कॉल which is very important because without function call you can't perform the operations that are written inside the function in this case. And the next one javascript allows javascript allows the users JavaScript allows the users to create their own functions, their own methods. जहाँ पे भी वो फंक्शन है चेंज टू मेथड. own method with help of with help of a predefined structure with the help of a predefined structure. Stop. Next line. JavaScript defines a keyword. JavaScript defines a keyword function which can be used to create which can be used to create a user defined function a user defined function with the below syntax with the below syntax. And you can write down the syntax line number 1 to line number 7.
Next line. The user defined function must consist of the user defined function must consist of a unique name which is used to identify the method which is used to identify the method. Full stop. Next line. The method can accept the method can accept parameters. The method can accept parameters during the function call. During the function call, known as known as the formal parameters. Known as the formal parameters. Known as the formal parameters. Stop. Next line. The user-defined functions. The user-defined functions must be explicitly called. The user-defined functions must be explicitly explicitly must be explicitly called must be explicitly called with a method name with the method name and parameters to perform the operation to perform the operation known as known as the method call known as the method call or the function call known as the method call or the function call or the function call. Full stop. The method in the next line, the method always by default, always by default returns returns a boolean value true. Always returns a boolean value true as its return type. Returns a boolean value true as its return type. Return type, RETURN TYP, return type. However, however, it can be changed. However, it can be changed. Changed with the return keyword. However, it can be changed with the return keyword. With the return keyword. तो यहाँ पे चॉइस आपका है मतलब व्हेन वी डोंट राइट एनी रिटर्न कीवर्ड सिर्फ फंक्शन इंस्ट्रक्शन लिखे हैं तो फंक्शन क्या करता है बूलियन वैल्यू ट्रू और फॉल्स बोल के सेंड करता है अगर नहीं मेरे को कुछ वैल्यू सेंड करने का है वी मेक यूज ऑफ द रिटर्न कीवर्ड फॉलोड बाय अ वेरिएबल इन दिस केस को जो वेरिएबल का नाम चाहिए वो वेरिएबल का नाम यहाँ पे बता दो सो इट विल रिटर्न दैट पर्टिकुलर वैल्यू व्हेन यू आर कॉलिंग द फंक्शन जो फंक्शन कॉल होता है उसके हिसाब से द रिटर्न टाइप विल बी डिसाइडेड इन दिस केस क्लियर विद दिस रिटर्न इज ऑप्शनल याद रखो
कंपलसरी लिखना बोल के जरूरी नहीं है. It is an optional in this. So just make a change in that syntax. के अंदर add line number 5. Okay. एक सिंपल एग्जांपल we will do is same. मैं क्या करता हूँ, I'll display a function, say display. I'll not pass any parameters as of now. ये डिस्प्ले फंक्शन के अंदर मैं अलर्ट फंक्शन को कॉल करूंगा, which will say good morning. Okay, सेव किया and I'll refresh the web page. I think we have closed it. I'll run the page again. And with display. The function is not called क्योंकि वो फंक्शन तभी डिस्प्ले करेगा when we call the function in this. वो फंक्शन को हमेशा नीचे कॉल करना है, जिधर आपने फंक्शन डेफिनेशन लिखा है उसके नीचे, या एनीवेयर बिलो दैट फंक्शन डेफिनेशन. ऊपर लोगे तो फायदा नहीं है. सो सेव करो एंड नाउ यू रिफ्रेश द पेज. वो फंक्शन कॉल हो गया. इट इज डिस्प्लेइंग मी द मैसेज इन दिस. ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन मेक यूज ऑफ अ यूजर डिफाइंड फंक्शन. इसके अंदर फिलहाल आज फर्स्ट क्लास है बोल के आई हैव जस्ट डिस्प्लेड अ मैसेज. इसके अंदर आप कुछ भी काम करवा सकते हो. ओके, सो यू कैन राइट ऑन दिस एग्जांपल लाइन नंबर 8 टू लाइन नंबर 14. So we'll stop at this point in today's class. So more on the display function. I just explained one method how to call the display function. Okay, using the tags मेरे को display function कैसे call करना है. That part we'll see it in the tomorrow's class. Yes, girls. Any doubts in the today's class? No, sir. Okay, practice karo. Send me the outputs in the group.